Hello friends, welcome to my channel Chemistry Advanced. Now I am going to start the stereochemistry. It's very important chapter, so let's start. Stereochemistry. What is the stereochemistry? Is meaning 3D arrangement of any molecule in space. What is isomer? Isomers are the molecules where their molecular formula is same but physical and chemical property is different. Isomer can be divided into two parts. One is structural isomer, second one is the stereoisomer or optical isomers. इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, कैसे पहचाना गया, इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? What is the difference between stereoisomer and structural isomer or structural isomer or constitutional isomer? Here connectivity is different. Connectivity is different, but for stereoisomer connective spatial arrangement is different. As for example this is orthogylene and this is metagylene. You can see that here for case of orthogylene position of methyl is 1 and 2 position, but for meta position is 1 and 3 position. The connectivity is different. But for stereoisomers, this is 1-3 position. This is one position methyl in the above the plane and 3 position methyl in the below the plane. But for this molecule here, the 1 position methyl is above the plane and 3 position is above the plane. There is a spatial arrangement is different. Here is the below the plane, here is the above the plane. Spatial arrangement is different. So this is called the stereoisomers. Okay. Again, stereoisomers can be divided into two parts: configurational and conformational isomer. For the case of configurational isomer, here the two isomers their energy difference is high. Okay, one isomer दोनों में एनर्जी डिफरेंस हाई होता है और यू कैन कन्वर्ट द वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर by breaking the bond, not the single bond, the rotation, or by breaking bond, and you can convert the one isomer to another isomer. Okay. Also the configurational isomer can be divided into two parts: enantiomers and diastereomers. As for example, this is a cis-butene, cis form and trans form. This is an example of the configurational isomer. For conformational, the one isomer to you can make the conversion from one isomer to another isomer by single bond rotation. By single bond, as for example of ethane molecule, this is a Newman form of ethane molecule. This is the eclipse form. CNFEAC, eclipse form of ethane molecule, and this is the staggered form. You can make this from, you can convert this isomer to this by only single bond rotation, but here you have to break the bond from cis to trans. This is for example of this. For configuration isomer you have to break the bond. Okay, bond breaking. This is a bond breaking. This is single bond rotation, single bond. Now I discuss about the projection of any organic molecules. There is a 4 types of projections. One is a wedge-dash, second one is a Sawhorse, Newman and Fisher. The 4 type of projection possible for the any organic molecule. For wedge-dash projection, you can write this. That's two molecule in the plane, and one is the above the plane and another one is the below the plane. Is that's you can write that's one. Also you can write there is a large molecule. Okay, you can write this way. Okay, this is the wedge-dash representation.
This is that you can write this source representation. This is the Newman projection. One example just I have written here. जस्ट मैं दिखाया जो कैसे होता है फिशर प्रोजेक्शन होता है, कैसे फिशर में कैसे लिखते हैं, कैसे न्यूमैन में लिखते हैं, कैसे सोर्स में लिखते हैं, कैसे वेज-डैश में लिखते हैं, बाद में मैं डिस्कस करूँगा पूरे चारों के चारों पूरे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगा। फर्स्ट में आज डिस्कस करूँगा वेज-डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज-डैश रिप्रेजेंटेशन में कौन सा पॉइंट आपको समझ मतलब याद करके रखना पड़ेगा। कन्वर्शन पोजीशन कैसे कन्वर्शन होता है, ओके, ये सब मैं सारे के सारे इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करूँगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स न्यूमैन, दिस 3 position in the 3D arrangement, 3-dimensional. Okay, 3-dimensional, and fisher is the 2-dimensional projection. This is a 2D, this is a 3D, this is 3D, this is 3D, and this is the 3D representation of molecule. Okay, wedge-dash, source and Newman is the 3D representation of the molecule, and fisher projection is the 2D representation of a molecule. Okay, next start the wedge-dash representation. हाँ, अब बात करते हैं wedge-dash रिप्रेजेंटेशन। दिस इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। दे हैव 4 atoms, you can write A, B, C, D. Okay, among the 4 atoms 2 are in the plane A and B, and 1 is the arrow from the observer. This is the arrow from the observer, arrow from the observer, and this bond is towards the observer, ओके। तो कुछ पॉइंट आपको याद करके रखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, you have to fix this bond. Okay, you have to fix this bond and rotate anywhere, मतलब एनी एंगल 180 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, यानी किसी भी एंगल के आप रोटेट कर दीजिए, जस्ट लाइक दैट। ओके, ये मेरा हाथ को इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये तो इसको मैं फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके इसको रोटेट कर रहे हो। ओके, इसको रोटेट कर रहे हो, दैट्स लाइक दैट। इसे रोटेट क्या होगा, ये होगा इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ओके, बी चला जाएगा, बी चला जाए बिलो द प्लेन, तो दिस बॉन्ड पे, और डी चला जाएगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड सी इन प्लेन। ओके, दिस इज पॉसिबल, मैं पहले ही बता दिया था। अगर आप सिंगल बॉन्ड से अराउंड रोटेशन कर रहे हैं तो वो आपको कन्फर्मेशन बन गया। ठीक है, एक मतलब अनदर कन्फर्मेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेशन। ओके, दिस इज अलाउड, दिस रोटेशन इज अलाउड। ओके, दिस आर द कन्फर्मर, दिस टू आर द कन्फर्मर, but for here you see that these two are fixed, A and B, this atom are fixed. I rotate that C and D. This is possible? This is not possible. This is not possible because if you like that, okay, you take, if you see that like this is the 4 atom. Okay, this is the towards the observer, this is the arrow from the observer. Okay, these two in the plane. Okay, अगर इसको फिक्स कर दिया, इसको ये दोनों का फिक्स कर दिया, रोटेशन पॉसिबल होगा? नो, दिस इज नॉट द पॉसिबल, ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। यू शुड हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तब ये पॉसिबल होगा। बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तब ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। configurational isomer, not the conformational isomer. These two are the configurational isomers. Okay, समझ आ गया? Configurational isomer.
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। और थर्ड पॉइंट है, किसी भी कभी कभी ये एग्जाम में ये दे देता है, जिगजैग टाइप का बॉन्ड दे देता है। यू कैन राइट दैट वन दिस, यस ए बी सी डी, ओके यू कैन राइट दैट। मैं ए को ले लिया, ये सी लिख दिया, डी लिख दिया, ए को ले लिया टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब बीटा बॉन्ड, वेज बॉन्ड, और दिस इज द डैश बॉन्ड में ले गया। एक बार ए को डैश बॉन्ड में ले लिया, एक बार ए को ले लिया वेज बॉन्ड, बी के डैश बॉन्ड, और एक बार ले लिया बी को ले लिया वेज बॉन्ड, इसको ले लिया, ए को ले लिया डैश बॉन्ड। यू कैन राइट दैट वन। और अनदर पॉइंट, you can rotate the molecules, no fix the, you can rotate any way, clockwise, anti-clockwise, just I rotate the 180 degree, just 180 रोटेट किया। मान लीजिए ये ऐसा है, वैसा हो, ठीक है, इसको रोटेट कर दे, ऐसा हो गया। जो आपका टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, वो क्या होगा, टुवर्ड्स जो एरो फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो जाएगा, और ये दोनों के इंटरचेंज हो जाएगा। जो टुवर्ड्स से ऐसा है तो ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बी चला जाएगा सी के जगह, ए के जगह में, बी के पोजीशन में चला जाएगा, बी चला जाएगा ए के पोजीशन में, ए चला जाएगा बी के पोजीशन में, सी चला जाएगा डी का पोजीशन में, और डी चला जाएगा सी के पोजीशन में, ओके। ये बन जाएगा, दिस इज अलाउड, दिस टू आर द कॉन्फर्मर, दिस टू आर द कॉन्फर्मर, दिस इज द अलाउड, ओके ओके। आज के लिए मैं ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे का सारे प्रोजेक्शन, जो बाकी तीनों प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन, इस तीनों प्रोजेक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे मैं करवा दूँगा। और जो कन्वर्सन है, जो इम्पोर्टेंट जो कन्वर्सन होता है, जो न्यूमैन टू फिशर, फिशर टू न्यूमैन, wedge-dash टू न्यूमैन, wedge-dash टू फिशर प्रोजेक्शन, सारे के सारे मैं प्रोजेक्शन के कन्वर्सन में करवा दूँगा। तो आज के लिए यहाँ तक, यह मैं वीडियो बंद करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों का पसंद होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।